Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss unit number 14, Lincoln Gorge. Lincoln is a proper noun, a name of a proper place. Gorge is a deep, narrow passage having a stream or a river flowing below it. कोई डीप नैरो पैसेज हो जिसकी यूजुअली नीचे कोई दरिया हो या नदी हो. Ravine is its synonym. The snow already more than half a foot deep. Obliterated means overshadowed, destroyed, ख़त्म करना. The line between earth and sky behind a hazy means unclear white curtain. चूँकि स्नो ज़्यादा थी तो जो हमें ज़मीन और आसमान के दरमियान लाइन नज़र आता है वो ख़त्म हो गई, मतलब सब सफ़ेद ही नज़र आ रहा था. एक ऐसा पर्दा जिसके आगे मतलब कुछ नहीं नज़र आ रहा था, बिल्कुल अनक्लियर था पूरा सीन. आई हैड बिन फॉलोइंग द पाथ ऑफ द फ्यूचर रेलवे फॉर 40 किलोमीटर. राइटर अपनी स्टोरी बता रहा है, शॉर्ट स्टोरी है और राइटर इसका कैरेक्टर है. फर्स्ट पर्सन में स्टोरी नरेट हो रही है, फर्स्ट पर्सन नरेटिव है. राइटर इस स्टोरी का प्रोटागोनिस्ट भी है. Although I could hear the roar in loud sound of machinery further back in the hills, I had seen neither work sites nor workers. कहता है कि आवाज़ तो सुनाई दे रही थी लेकिन न वर्कर्स नज़र आ रहे थे और न साइट्स. Entering Lincoln Gorge, my irritation mean discomfort, increased even in clear weather. In this gorge the sun never shone. It didn't matter where you looked up along the twisting mean zigzag, curling, not straight course. The most you could see of the sky was a patch no bigger than the palm of your hand. M dash यूज हुआ है, एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ होता है. Now it was dusk, morning time, and sprawling mean rotating. Snowflakes, small solid shapes of snow. And the gale means strong wind made every step a struggle. जैसे ही राइटर बता रहा है मैं एंटर हुआ लिंकन गॉर्ज में तो जो डिस्कम्फर्ट थी, बेचैनी थी, वो उसमें इजाफा हुआ. क्योंकि रीज़न क्या थी, यहाँ पर अगर तो कोई साफ़ वेदर हो तो उस दिन भी सूरज नहीं नज़र आती. अब चूँकि एक तो मॉर्निंग टाइम था, डस्क और नहीं डस्क नहीं इवनिंग टाइम था. डस्क मीन इवनिंग, डॉन मॉर्निंग टाइम है. दूसरी रीज़न ये थी कि बर्फबारी थी. तो क्योंकि ये इसका जो रास्ता था उसमें बहुत सारे टर्निंग्स थे, तो अगर तो क्लियर वेदर में बंदा ऊपर देखे तो सिर्फ आसमान के छोटा सा टुकड़ा नज़र आता था. अब तो फिर बर्फबारी भी थी, हवा भी तेज़ चल रही थी, तो सिंगल स्टेप जो था वो मुश्किल था राइटर के लिए. Construction in the gorge was very busy. Everywhere people were at to work. Generator, cement mixers, air compressor shook the ground. काम चल रहा था मुख्तलिफ. Hundreds of light bulbs, clean mean shone, चमक रही थी bulbs. Dim mean light कम थी, ज़्यादा नहीं थी, येलो. Electric wires crisscrossing mean intercrossing, interconnected थे. Giant means huge, great. Spider web were scarcely mean मुश्किल नज़र आ रहे थे. But I could see the overhead cables and their pulley car sliding back and forth loaded with material. लेकिन ऊपर जो कार्ट्स लगी हुई थे, पुली कार्स लगी हुई थी, चेयर लिफ्ट्स लगी हुई थी जो मटेरियल को एक साइड से दूसरी साइड तक लेके जा रही थी, वो सिर्फ राइटर को नज़र आ रही थी. Hungry, cold, I tripped and fell scraping. Scraping means scratching. Tripped means to fall due to an obstacle. Obstacle की वजह से गिरना तो tripped होगा, वैसे ही गिरना हो तो फिर fail होगा. My hands. Scraping means scratching. Enough, I would find some place under a cliff. Cliff mean a vertical rock. कड़ी चट्टान. Out of wind and rest
a few hours. If I reached the material depot tomorrow morning by 10 o'clock, that still wouldn't be too late. Stumbling mean इस तरह टोकरे खाते हुए, around in the dark like this. I was liable mean bound, expected to fall into some deep ravine. Ravine और gorge almost same meaning है. गहरी घाटी, एक ऐसी जगह जिसके नीचे दरिया या नदी हो और दोनों साइड्स पे माउंटेन्स हो, एक नैरो पैसेज हो. एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ द मटीरियल्स डिपार्टमेंट चीफ. आई वुड हैव टू बी पुट ऑन द यूज्ड अप मीन एक्सपायर्ड लिस्ट. अब जैसे ही राइटर इस तरह जा रहा था तो क्योंकि एक तो सर्दी थी, भूख भी लगी थी, तो बार बार गिर रहा था, हैंड स्क्रैच हो रही थी. तो राइटर ने कहा बस अब कॉपी है, मैं कुछ और के लिए रेस्ट करता हूँ. सुबह अगर मैं 10 बजे भी पहुँच जाऊँ अपने डेस्टिनेशन तो लेट नहीं होगा, क्योंकि इस तरह अगर मैं चलता रहा टोकरे खाता हुआ तो एक्सपेक्टेड है कि मैं किसी डीप घाटी में गिर जाऊँ और ये मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा होगा और जो एक्सपायर्ड चीज़ों का लिस्ट है उसमें से मेरा नाम भी लिखा जाएगा. I noticed a path leading to a cave in the cliffside. A door contained hanging in the entranceway showed that the cave was undoubtedly means without a doubt occupied by workers. Grasping means holding. Branches along the steep path I hauled mean dragged myself up to the door and entered. जो नज़र आ रहा था राइटर को एक केव, वो क्लिप साइड में से उधर एक कर्टन लगा हुआ था तो उससे नज़र आ रहा था, ये डिस्प्ले हो रहा था साबित कि यहाँ पर वर्कर्स रह रही है. तो ब्रांचेस को पकड़ते राइटर के मैं एंटर हुआ अपने आप को ड्रैग करते हुए. Strange, seated on a small stool in the doorway was a little boy, 7 or 8 years old, elbows on his knees, supporting his face in his hand. His cheeks were red with cold. He had been peering means looking with concentration or looking with difficulty. At the opposite cliffside through a rent means hole, surah. In the curtain he glanced means looked quickly at me briefly as I came in, then went back to his observation. जब राइटर एंटर हुआ तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था स्टूल के ऊपर, तकरीबन 7-8 साल उसकी उम्र थी. एल्बोज नीज के ऊपर और अपने हैंड को अपने कप बना के फेस उसके अंदर रखा हुआ था. उसकी चीक्स रेड थे कोल्ड की वजह से. उस साइड पे वो देख रहा था जो पर्दे में करंट होल सुराख. और जैसे राइटर तो थोड़ी देर के लिए राइटर की तरफ देखा, फिर उसने अपनी ऑब्जर्वेशन रिज्यूम कर दी. द केव वॉज लार्ज बट क्वाइट मीन्स टोटली entirely warm. It had a stove and eating utensil mean बर्तन वगैरह खाने की. On the wall above a bed was a colored New Year picture of chubby children pulling the turnip. ऊपर वो जो दीवार थी बेड के ऊपर, उसके ऊपर एक पिक्चर लगी हुई थी जिसमें चबी मीन कुछ मोटे से बच्चे टर्निप को खींच रहे थे और उनकी पिक्चर पेंटिंग लगी हुई थी. All the walls had been papered with old newspaper now blackened by smoke from the stove. बाकी जो दीवारें थे उनके ऊपर न्यूज़पेपर लगी हुई थी, न्यूज़पेपर की तरह उनको कवर किया गया था और फिर वो न्यूज़पेपर की जो कलर थी वो ब्लैक हो चुकी थी स्मोक की वजह से जो झोली से निकलती थी. Why isn't anybody home? I asked, shaking the snow from my coat and hat. The little boy turned his head. His eyes flashed. Aren't I anybody, uncle? He rose and walked towards me, his hands behind his back, his chest extended as if to say, not only am I somebody, I am a very grown up somebody. राइटर ने क्वेश्चन किया बच्चे से कि घर में कोई नहीं है. तो वो उठ के आया, सीना बाहर की तरफ निकालते हुए कहा कि मैं नहीं हूँ कोई. और इससे वो ये एक्सप्रेस कर रहा था जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि वो कोई है और उसके साथ साथ वो ग्रोन अप भी है. आई कप्ट यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है.
कब शक्ल अपने हाथ को देना। हैज़ राउंड लिटिल पेज इन माई हैंड, उसका चेहरा अपने हाथ में लिया। राइटर ने, यू आर अ प्रेटी शार्प यंग एम, एम मीन मिस्chievous चाइल्ड। ही पुश माई हैंड्स असाइड डबलिंग हिज फेस्ट, अपने आप की हाथ को बंद किया, फिंगर्स को कर्व करके बंद किया। ही कॉक्ड मीन्स लिफ्टेड his head to one side and demanded, who are you calling? Am I have a name, pointing at the baby girl asleep on the bed. He informed me her name is Poching, mine is Chengyu. राइटर ने उसको कहा कि आप एम पे मिस्टीरियस चाइल्ड है, तो इस पर वो दोबारा से शॉक हुआ, अपने हाथ को कर्व करके बंद करके हेड उठा के कहा कि आप मुझे एम क्यों कह रहे, मेरा तो नाम है। फिर बेबी गर्ल, उसकी जो सिस्टर उधर थी, उसकी तरफ इसका नाम जो है पॉचिंग, और उसका नाम छोटा बच्चा 7-8 साल का था, उसका नाम है चेंग्यू। No doubt about it, these kids were like thousands of others I had met, burned and raised on construction sites. The workers liked to name their children after the projects where they were burned. Chengyu probably had first seen the light of the day on the railway project between Chengdu and Chongqing, also known as Yu. His baby sister Poching very likely had been burned right here at the site of the future Poching to railway. राइटर की कमेंट है कि ये जो बच्चे थे हज़ारों उन बच्चों की तरह थे जो ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ पर वर्कर्स काम करने थे वहाँ पर उनकी बर्थ होती है, तो फिर उसी प्रोजेक्ट की बेस पर उसके अकॉर्डिंगली इनके नाम रखे जाते हैं। तो इन दोनों बच्चों के नाम भी ऐसी जगह या प्रोजेक्ट्स की बात रखी गई है कि नाम पे रखी गई है। I sat by the stove smoking and rubbing the drying mud from my hand. Chengyu crawled on to my lap and looked into my eyes. Is it going to snow tomorrow, uncle? I pressed his icy red little rose. As soon as we get our telephone line connected up with the heaven, I will ask for you. Angrily he leaped, means jumped down and stood a meter away, scorning me, looking angrily at me. Quit your kidding, mean mazak, fun. You have got a newspaper in your pocket, why don't you look at the weather report? He resumed his seat in the doorway, clamped means put his elbows on his knees, rested his face in his hand, and peered, mean again looking out through the rent in the curtain. When I asked him where the kettle was, he ignored me. I certainly was sorry I had offended, mean angry, naraz karna, my small host. Why do you want to know about the snow, Chengyu? I asked him. Is it because you can't go out and play when it's snowing? He didn't even bother to look at me. Papa says if it's still snowing tomorrow, we will have to quit. Quit mean give up, stop work. What does your pa do? He opens up mountains, the child replied proudly. Where? Chengyu pointed with pursed lips at the work site opposite. राइटर फिर बैठा रहा उधर छोले के पास, तो अपने जूतों और हाथों से वो जो कीचड़ वगैरह थे वो साफ़ करने लगा। चेंगू आया, बैठा और पूछा कि आप बताइए मुझे, क्या कल बारिश होगी, बर्फबारी कंटिन्यू रहेगी या स्टॉप होगी? राइटर ने मजाक में कहा कि चले जैसे हमारा टेलीफोन लाइन कनेक्ट होता है हेवन के साथ, मैं पूछता हूँ। जवाब में उसको गुस्सा आया कि आप मजाक बंद करें, आपके पॉकेट में न्यूज़पेपर है, उसमें से वेदर रिपोर्ट देख के बताई। तो फिर जाके वो बैठ गया उधर, अपनी पोजीशन को रिज्यूम करके उसी तरह एल्बो हैंड अपने उसी पोजीशन पे रखी जिस तरह पहले रखा था। राइटर ने पूछा कि केटल का है, लेकिन उसने जवाब ही नहीं दिया, इग्नोर किया मुकम्मल तौर पर। तो राइटर को फील हुआ कि मैंने अपने मेज़बान को नाराज़ कर दिया है। फिर उसने पूछा राइटर ने कि क्या रीज़न है जो आप पूछना चाहते हैं कि कल बर्फबारी होगी या नहीं, क्या इसलिए कि आप फिर नहीं खेल सकेंगे? तो जवाब उसने फिर भी नहीं दिया। तो फिर वो कहते हैं कि जवाब जब दिया तो ये कहा कि अच्छा, पापा ने कहा अगर कल बर्फबारी कंटिन्यू होती है रहती है तो हम काम स्टॉप करेंगे।
राइटर ने फिर पूछा जॉब कहाँ पर करते, क्या करते पापा, क्या काम, तो उसने उस तरफ की कि वो माउंटेन्स ओपन करते हैं, मतलब खुदाई वगैरह वो काम प्रोजेक्ट में करते हैं। कहाँ पर, जब राइटर तो माउंटेन की तरफ अपोजिट साइड इशारा किया कि वहाँ। I looked, all I could see was a searchlight. Searchlight means ऐसी लाइट जो किसी एक जगह पर फोकस्ड हो। Beam mean rays, shining through the drifting. Drifting mean जिसकी खास डायरेक्शन ना हो। Snowflakes straight up into the heavens in its light I could vaguely mean unclearly. Discern mean समझना, understand, perceive, comprehend. A few dozen men who seemed pasted to the side of the towering cliff, drilling holes for dynamite charges, जो explosions होती है. The holes were like the steps of a ladder to the sky. जब राइडर ने उस तरफ देखा तो कुछ लाइट नज़र आ रही थी जिन, और उधर फिर वही स्नोफ्लेक्स की हो रही थी नज़र आ रही, लेकिन कुछ ख़ास डायरेक्शन नहीं थी। मुश्किल से राइडर को नज़र आए थे कुछ एक डज़न बंदे जो है वो ऐसे नज़र आते जैसे कि वो क्लिफ के साथ पेस्टेड हो, और वहाँ पर वो होल्स वो ड्रिलिंग कर रहे थे, और ये जो होल्स थे ये एक लेडर की स्टेप्स की तरह थे। सिमिली यूज़ हुआ है। How can you tell which one is your father at this distance? I asked. I can't see him plainly means clearly. But Pa says he can see me. He says all he has to do is turn around. I often sit here so he can see me. So that was it. The icy snow melted from my boots. My numb means senseless. Legs dying means aching. उसको नहीं melting. आउट एक मीन दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था। आई स्टैम्प टू हेल्प सर्कुलेशन। अब राइटर की बूट से स्नो मेल्ट हो रहा था, उसकी लेग्स जो थे वो भी सेंसलेस हो चुके थे, मेल्टिंग हो रही थी स्नो की। तो राइटर ने फिर वहाँ पर मूवमेंट की, स्टैम्प मीन मूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। चेंग्यू waved his hand warningly. I understood he was afraid I would wake his baby sister. जब राइटर मूवमेंट कर रहा था तो चेंग्यू ने उसको वार्निंगली हैंड रेस किया, हैंड वेव किया, तो राइटर को समझ अच्छा उसको डर है कि उसकी बेबी सिस्टर जो है वो जाग जाएगी। You really take good care of your sister, I commended. Mama says my job is to look after her. When Mama comes home, I knock off. Knock off means stop my duty. हाँ, वो कहते हैं कि कमेंडेड मीन प्रेज्ड, कि ये मेरी ड्यूटी है, जब मामा आती है तो फिर मैं अपनी ड्यूटी स्टॉप करता हूँ। सो यू आर ऑन द जॉब एवरी डे। आई हग्ड हिम। व्हाट डज मामा डू? ही पॉइंटेड टू द ट्रैफिक रोड बिलो द केब। राइटर ने फिर उसकी मदर की जॉब की तो उसने उधर इशारा किया ट्रैफिक रोड की तरफ। आई कुड सी अ पर्सन स्टैंडिंग बाय टेलीफोन पोल बिसाइड द रोड। बिसाइड मीन्स नियर। Covered with snow, she looked like a white stone image. Apparently means seemingly ज़ाहिरी तौर पर। She was directing traffic. The road, not very wide, had been blasted through the rock. Ordinarily means usually, generally. Carts जो पुलिस होते हैं हाथ से धकेलने वाली गाड़ी वगैरह। Mules, donkeys and people, no doubt. Stream mean large number में आना, फ्लो होना। In both direction along that road 24 hours a day, someone had to keep the traffic in order. तो जब उसने उस तरफ इशारा किया उधर, राइटर ने जब देखा एक फिगर नज़र आ रहा था, एक इमेज नज़र आ रहा था उधर टेलीफोन पोल के पास रोड में, तो वो एक स्नो से भरी हुई इमेज थी। जाहिर था कि वो एक जो बंदी थी या बंदा था, बंदी थी उसकी मदर थी, तो वो ट्रैफिक डायरेक्ट कर रही थी, ट्रैफिक को देख रही थी। वो जो रोड था फिर उसकी डिस्क्रिप्शन है, थ्रू द रॉक उसको बनाया गया है। यूजुअली आम दिनों में बहुत सारी गाड़ी, एनिमल्स वगैरह इस रोड में बड़ी तादाद में चलती है, लेकिन आज फिर भी वो यहाँ पर ड्यूटी दे रही है। टुडे बिकॉज ऑफ द स्नो देयर weren't many people or vehicles on the road. She could well have spent the day at home, but there she stood, and there she would remain 3 months, 5 months, or 3 years, 5 years, if need be. Perhaps from time to time she raised her head to gaze. Gaze means look up at her child or at her husband, who was scaling means mounting the cliffs between the mountains and the sky. When he paused to wipe
sweat from his brow could see the determined mean committed figure of his wife or the tiny mean small image of his little boy. Even though it was a snowy windy night, even though the worker, his wife and children couldn't see one another clearly, I was sure they could feel a mutual mean both-sided loving encouragement and sense that each was looking forward to the moment of family reunion. अब राइटर बता रहा है कि आज चूँकि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है तो ये फीमेल चेंगू की मदर आराम से दिन होम में स्पेंड कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कमिटेड होकर अपनी ड्यूटी दे रही है जब तक ज़रूरत होगी। और कभी के बार वो देखती है अपने हस्बैंड की तरफ, अपने बच्चों की तरफ। फिर राइटर अपनी कमेंट कर रहा है कि ये एक दूसरे को तो क्लियरली नहीं देख सकते, लेकिन इनके अंदर एक म्यूचुअल लविंग इनकरेजमेंट है कि वेरी सून ये सारे रीयूनाइटेड। अभी तो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, फादर अलग, मदर अलग और चेंगयू और उसकी सिस्टर अलग, लेकिन बहुत जल्दी ये होपफुल है कि इनकी रीयूनियन होगी। आई glanced mean looked at Chengyu. The child had placed his hand in his sleeveless and pulled his neck into his collar. He kept dozing up means to sleep unintentionally. नींद आ रही थी उसको, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी दे रहा था। यू आर लायबल मीन बाउंड टू कैच हेल, बेटर गेट इन टू बेड, गो टू स्लीप। तो राइटर ने उसको कहा आपको सर्दी लग सकती है, इसलिए बेहतर है कि आप सोने चले जाएं। He looked at me dreamily for a moment, probably thinking that his parent had returned. When he realized who I was, he shook his head violently. No, I won't. Violently means forcefully, emphatically. No, I won't. Why not? He rubbed his eye with his fist. Papa and Mama say a man should never leave his post. I hugged him tightly and pressed my cheek against it. Then I rose, buttoned my coat, put my head down firmly, सख्ती के साथ tightly, left the cave and walked down the path following the road that had been blasted through the rock. I pushed on the words of the child, echoing me, resonating, bouncing back in my head. A man should never leave his post. A job was waiting for me. I wanted to reach my destination without any further delay. जब राइटर ने उसको कहा आप सोने चली जाए, तो जवाब में पहले वो देखता रहा राइटर की तरफ, उसको ये फील हुआ कि शायद ये मेरे पेरेंट्स वापस आ गए, लेकिन जब उसे नहीं किए तो राइटर है, पेरेंट्स नहीं है, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पापा ने कहा है एंड मम्मा ने कहा है कि बंदी की जो पोस्ट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जॉब है, वो उसे कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इससे क्या हुआ, राइटर को एहसास हुआ कि इस वक्त मैं अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पर बैठा हूँ इनके साथ। तो अपने सामान उठा के वो अपनी डेस्टिनेशन के लिए रवाना हुआ और बग़ैर किसी डिले के वो चाहता था कि अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाए, क्योंकि वो बच्चे के अल्फाज उसके माइंड में गूंज रही थी। उसे एहसास हुआ, बच्चे की बातों से इंस्पायर हुआ, मोटिवेटेड हुआ।